अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर एमआरजे फिज़िक्स मैथ आज आप लोगों के लिए लाया है एक वेरी वेरी स्पेशल और वेरी वेरी टू द पॉइंट फिज़िक्स गेस जो आपको काम आने वाला है सेकेंड ईयर के 2026 के एग्ज़ाम में। इसमें हमने जस्ट 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिक किए हैं। जस्ट 11 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे और सिर्फ 7 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले आपने तैयार करने हैं। उसके अलावा चंद एक डेफिनेशंस जो आपको क्वेश्चन आंसर की शक्ल में वीडियो के अंदर मिल जाएंगी वो आपने तैयार करनी है। इंशाल्लाह ताला आप 70+% मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है गाउसियन लॉ, उसकी जस्ट आप डेफिनेशन करेंगे और उसका एप्लीकेशन बी और सी करेंगे। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग नंबर 3 एम्पेयर्स लॉ, इसकी करेंगे आप डेफिनेशन और इसका एक ही एप्लीकेशन है वो आपने तैयार करना है। उसके बाद आप तैयार करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। उसके बाद RLC सर्किट्स जो कि दो हैं, एक है सीरीज रेजोनेंस सर्किट और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद आपने एनर्जी बैंड थ्योरी तैयार करनी है और फिर आपने तैयार करना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिए हुए गैस 100% कामयाब रहते हैं, तो आप पूरी तसल्ली के साथ इस गैस को तैयार कर सकते हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर शामिल है न्यूमेरिकल नंबर 12.4, 12.5, फिर 13.4, 13.5, फिर 14.5, फिर न्यूमेरिकल 14.7, उसके बाद न्यूमेरिकल 15.6, उसके बाद न्यूमेरिकल 15.11, फिर आपके पास आता है न्यूमेरिकल 16.4, फिर न्यूमेरिकल 16.6 और लास्ट 11वां न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल 18.3। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 12, फिर चैप्टर 13, फिर चैप्टर 14, फिर चैप्टर 15, फिर चैप्टर 16, फिर आप चले जाएंगे चैप्टर 18 पर और लास्ट जो चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट आपने तैयार करने हैं वो चैप्टर 19। आगे हम चंद वो डेफिनेशंस देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको वीडियो में सुन कर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप वो तैयार कर लेंगे तो फिर आपके पेपर में कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electric force, the fundamental force that hold together the positive and negative charges that make up atom and molecules. Coulomb's law, a law stating that the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Point charges, charges whose physical size are very small compared to distance between them. Permittivity of free space epsilon naught, an electrical constant representing the capability of a vacuum to permit electric field. Its value is 8.85 10 power minus 12 Newton meter square per coulomb square. Dielectric, an insulating material placed between plates of a capacitor or between two charges. Relative permittivity epsilon r, the ratio of the force between two charges in vacuum to the force between them in specific medium is known as relative permittivity. टॉपिक 12.2 एंड 12.3 फील्ड्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें से पहली डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट defined as the force experienced per unit positive charge per unit test charge is known as electric field intensity given as E is equal to F over Q naught. Electric field lines, imaginary lines that provide a visual map of the direction and strength of the electric field are known as electric field lines. Neutral zone, a specific spot between two identical like charges where the net electric field intensity is zero. Topic 12.4 application of electrostatics. Xerography, the electrostatic process used in photocopying derived from the Greek words xeros mean dry and graphos mean writing. Photoconductor, a material like selenium that acts as insulator in dark but becomes a conductor when exposed to light. Toner, a dry black powder given a negative charge so that it adheres to the positive images on a photocopier drum. Inkjet printer, a printer that uses electric charge to deflect ink droplets into paper or into a gutter. Topic 12.5 electric flux and Gauss's law. Electric flux, the total number of electric field lines passing through a specific area is known as electric flux. Vector area, a vector whose magnitude is the surface area and whose direction is perpendicular or normal to the surface is known as vector area.
Gauss's law, illustrating that the total electric flux through any closed surface is 1 over epsilon r times the total charge enclosed within it. Gaussian surface. An imaginary closed surface of any shape used to calculate the electric field intensity is known as Gaussian surface. Topic 12.6, Electric potential. The work done in moving a unit positive charge from infinity to specific point in the field while maintaining equilibrium is known as electric potential. Potential difference. The difference in electric potential between 2 points equal to the work done in moving unit charge between them is known as potential difference. Equipotential surface, a surface where all points are at the same electric potential. Potential gradient, the rate of change of electric potential with respect to distance. और इसमें ना मैक्सिमम रेट है, जस्ट रेट नहीं है. फार्मूला इसका है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर. तो इसमें जो टर्म है ना डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है. Electron volt, the energy acquired or lost by an electron as it moves through a potential difference of 1 volt is known as electron volt. Its value is given by 1.6 10 power minus 19 joule. 12.7, Capacitors and capacitances. Capacitor, a device used specifically for storing electric charge and energy, is known as capacitor. Capacitance, the ability of a capacitor to store charge, defined as ratio of charge to potential difference. Farad, the SI unit of the capacitance is known as farad. 1 farad stores 1 coulomb of charge at a potential difference of 1 volt. Electric polarization, the process where molecules of electric align their positive and negative ends placed in an external field is known as electric polarization. Energy density, the amount of energy stored per unit volume in the electric field between the plates of a capacitor is known as energy density. Time constant, denoted by tau, the time required for a capacitor to charge to approximately 63% of its maximum value is known as time constant, mathematically given as tau is equal to RC. स्टूडेंट्स, तमाम डेफिनेशन पढ़ने से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डेफिनेशंस जल्दी जल्दी स्क्रॉल करवा के दिखा देता हूँ. आप इनको पढ़ते जाएं और नोट करते जाएं.